This conference will now be recorded. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Dr. Najam Iqbal. I welcome you all on behalf of Ophthalmology Department. To start the proceedings, I'll request Dr. Farhan to come and recite few verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى सदक अल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब सबसे बढ़कर करम वाला है, जिसने कलम से सिखाया, इंसान को सिखाया जो वो ना जानता था। हरगिज़ नहीं, बेशक आदमी सरकश हो जाता है जबकि वो अपने आप को गनी पाता है। बेशक आपके रब ही की तरफ लौट कर जाना है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। Now I'll request all of you to please stand in respect of national anthem. Was. Thank you very much. Now I'll request Professor Dr. Umaira Zafar to come and say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. On behalf of Fatima Jinnah Medical University, Sir Ganga Ram Hospital, and Department of Ophthalmology, I welcome you all to this educational activity. OSP team, OSP General Secretary, Professor Dr. Arshad Sahab, and OSP team, and I would like to welcome Professor Imran Akram Sahab Sahab. So thank you very much for joining, and Dr. Hussain for joining us. These clinical meetings
have the essence of curiosity, which dwells the human spirit. We, being the medical personnel, share this learning journey with our colleagues and the aspiring ophthalmologist to deliver a refined services to our patients. So as we celebrate our 79th Independence Day today, we honor the historic sacrifices made by our ancestors. We pledge to serve our country with honesty, unity, and discipline, and strive to make Pakistan prosperous nation every day. जैसा कि शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सरे आदम है, ज़मीर कुन फिका है जिंदगी। और साथ ही अल्लामा इकबाल ने दुनिया पैदा करने का फॉर्मूला भी हमें बता दिया। उन्होंने फरमाया, मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आंख जिसका चराग। May Allah be our strength and guidance always. Ameen. Now I will request Dr. Najam Iqbal, our Associate Professor and asset to our department, to proceed with the case presentations by our very keen and ambitious residents. I formally welcome you all to this educational activity. Thank you very much. Our first presenter is Dr. Abdul Qayyum. He's a fourth year resident, and his topic is retinal capillary hemangioma. Assalamu alaikum. I am fourth year resident ophthalmologist at Sir Ganga Hospital, Lahore. Today I am going to present a case. My patient is 14 years old, male resident of Lahore, presented to OPD on 5th April 2026 with complaint of dimness of vision in the left eye since 1 week. My patient was in the usual state of health when he felt dimness of vision in the left eye 4 years ago, which was asymmetrical, gradual in onset, progressive in nature. This dimness of vision is not associated with pain, discharge, or redness, and no history of flashes, floaters, or any visual field effects was found. Past ocular, medical, and surgical history was unremarkable. There are 5 siblings, 2 brothers, 3 sisters, all are healthy and well. He belongs to lower socio-economic class. On general physical examination, a young boy sitting on a chair, well oriented in time, place, and person. He was afebrile, BP and pulse was normal. Rest of the general systemic examination was also normal. On ocular examination, visual acuity in the right eye was 6/6 and in the left eye was 6/18, not improved with refraction. Rest of the anterior segment examination was normal. Right fundus was normal and left fundus showed round red to orange vascular lesion along inferior arcade and nasal to the disc 1 to 2 in number and about the size of 1 disc diameter, along with dense perifoveal exudates and macular edema. Vessels, tortuosity, and exudates anterior to the inferior arcade were also noted. So based on our history examination
And our differential diagnosis include retinal capillary hemangioma, cavernous hemangioma, retinal macroaneurysms, and racemose hemangioma. OCT was advised. OCT macular left eye shows distorted foveal contour and cystic spaces in the layers of the neurosensory retina. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का सब प्रोफेसर लतीफ़ चौधरी साहब एंड प्रोफेसर शफीक साहब एंड प्रोफेसर कासिम लतीफ़ साहब, OSP प्रेसिडेंट लाहौर ब्रांच. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Start करें. OCT was advised. OCT macula left eye shows distorted foveal contour and cystic spaces in the layers of neurosensory retina, along with perifoveal exudates. Fundus fluorescent angiography, early phase showing hyperfluorescence and late phase showing hyperfluorescence due to leakage from tumor lesions. Systemic investigations, abdominal ultrasound and MRI brain was carried out to rule out any systemic disease, and which was normal, both of which were normal. So based on history, examination, OCT, FFA findings and systemic investigation, our provisional diagnosis of retinal capillary hemangioma was made. Our management plan includes intravitreal anti-VEGF bevacizumab and argon laser photocoagulation. 2 doses of intravitreal anti-VEGF bevacizumab were given 1 month apart, and there is a plan for 1 further dose. This image showing OCT left eye after second dose of intravitreal bevacizumab showing persistence of macular edema, and foveal thickness was slightly reduced from 570 to 460 microns. Two sessions of argon laser photocoagulation were done 3 weeks apart. Burns were applied directly at the lesion with laser settings of 200 milliwatt energy, 300 micron spot size and 0.2 second duration. So what is retinal capillary hemangioma? It is a benign vascular tumor arising from retinal capillaries. It may occur as a solitary lesion which is usually sporadic, or multiple lesion which is always associated with von Hippel-Lindau disease. It can present as orange-red vascular lesion with dilated feeder vessels. Retinal capillary hemangioma can be associated with von Hippel-Lindau disease, which is autosomal dominant disorder caused by mutation in VHL tumor suppressor gene on chromosome 3. It can be associated with CNS hemangioblastomas of cerebellum, medulla oblongata, pons, and spinal cord, pheochromocytoma, renal carcinoma, and pancreatic islet cell carcinoma. It can also be associated with cysts of testes, kidneys, ovaries, lungs, bones, and pancreas. So screening protocol for von Hippel-Lindau disease is a key diagnostic tool which includes annual physical and retinal examination, abdominal and renal ultrasound, 24 hours urinary catecholamine levels to rule out pheochromocytoma, audiometry for any hearing problems, 2 years abdominal and MRI scans, and genetic testing for suspected VHL should be done. Here are some treatment modalities based on latest guidelines. Treatment for juxtapapillary hemangiomas may be challenging, which include observation for asymptomatic juxtapapillary hemangiomas without exudation. The recently FDA approved oral hypoxia inducible factor alpha inhibitor belzutifan for juxtapapillary hemangiomas with exudation and specifically associated with von Hippel-Lindau disease. Laser photocoagulation for smaller peripheral lesions less than 1.5 mm is treatment of choice that can achieve 100% success rate. Cryotherapy can be alternative for peripheral lesions which are larger than 1.5 mm. However, success rate can drop from 100% to 47 to 73%.
Other treatment modalities may include brachytherapy and vitreoretinal surgery for non-absorbing vitreous hemorrhage and TRD. So what is my take-home message? Retinal capillary hemangioma can manifest as may occur as initial manifestation of von Hippel-Lindau disease. Even a solitary or smaller lesion may demand systemic screening for von Hippel-Lindau disease. Early identification and treatment can prevent permanent vision loss. Thank you. Next presenter is Dr. Zoha Mushtaq. She is third-year resident, and her topic is sebaceous gland carcinoma. Assalamu alaikum. My name is Dr. Zoha Mushtaq, third-year resident of ophthalmology at Sir Ganga Hospital. Today, I am going to be presenting a case of 71 years old male, resident of Khodiyan Khas, who presented to us on 29 September 2025 with presenting complaint of mass in the upper eyelid for the last 6 months. My patient was apparently well 6 months back when he noticed a small swelling in the upper eyelid of his left eye. The lesion was small and painless initially. It gradually increased in size over the next 3 months. Due to the progressive enlargement, my patient went to the local doctor in town and the lesion was surgically excised. After excision, it reappeared at the same site and started growing at a rapid pace until it reached its final size in the next 3 months. During this time, there was no history of trauma, pain, bleeding, discharge. There was no history of fever and systemic illness. There was no history of similar swelling elsewhere in the body. My patient has no comorbidities for his right eye. He underwent phacoemulsification with IOL 3 years back. Past medical and surgical history was non-significant. However, my patient smoked hookah for past 35 years, was married, and belonged to the lower socioeconomic status. During general physical examination, my patient was sitting comfortably in chair, well oriented in time, place, and person with stable vitals. Systemic review was non-significant. Ocular examination of the right eye suggested visual acuity of 6/9. Lids and adnexa were normal. Extraocular movements were intact. Cornea was clear. Interior chamber was quiet and formed. Pupil was round and reactive. It was pseudophakic with normal fundal parameters. Moving on towards the ocular examination of the left eye, the lesion was present on the left upper eyelid. It was 3 to 4 centimeter in size, multilobulated irregular mass with irregular margins. Ulceration was present inferiorly. It was pinkish in color. Overlying skin was stretched and shiny. However, surrounding periorbital skin was normal. There was no increase on Valsalva maneuver. On palpation, it was non-tender, firm, nodular mass with no local rise in temperature. No resistance to retropulsion was found. It was confined to the left upper eyelid, and no fixation was found with adjacent periorbital structures. Examination of the periocular and submandibular lymph nodes were unremarkable. On auscultation, no bruit was heard. So the list of differential diagnoses includes sebaceous gland carcinoma, squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, Merkel cell carcinoma, malignant melanoma, and keratocanthoma. However, sebaceous gland carcinoma was my provisional diagnosis depending upon the history and examination. The list of investigations that we carried out included CBCs, RFTs, LFTs, chest X-ray, ECG, CT scan, and B scan. All of them were within normal limit. This is a film of CT scan that clearly shows soft tissue mass swelling in the region of left upper eyelid. The CT scan report clearly stated the lesion to be a lobulated mass measuring 24 into 7.8 into 29 millimeter with no intraorbital and intraconal extension. So the management plan consisted of 2 basic steps. The first step was excision of mass and sending the mass for the excisional biopsy, whereas the second step was lid reconstruction, for which we chose Cutler-Beard stage 1 and stage 2 procedures. The management plan step 1 was carried out on 4th October 2025. This is the picture before the excision of mass. These are the pictures after the excision of mass. During this time, the rehabilitation was done by maintaining the Sahaf sweat chamber. So histopathology report came that clearly stated the lesion to be a well to moderately differentiated sebaceous gland mass with brisk and atypical mitosis. However, the margins were clear on histopathology. According to the American Joint Committee on Cancer Classification, tumor was graded as 3-3A and not M0.
which made sebaceous gland carcinoma my definitive diagnosis. So lid reconstruction was done on 5th November 2025. The patient was draped. An inverted U-shape incision was marked on the lower eyelid corresponding to the defect on the upper eyelid. Local anesthesia is given. Lid guard is placed. A full thickness incision is given 3 to 4 millimeter below the lower lid margin to create a lower lid flap that was further divided into interior and posterior lamellas. The interior lamella consisted of skin and orbicularis, whereas the posterior lamella basically consisted of conjunctiva and capsulopalpebral fascia. So first, the posterior flap consisting of the conjunctiva was advanced up to the level of the upper eyelid and was sutured with upper conjunctival remnant with 6-0 vicryl, followed by the interior lamella that was also advanced to the upper eyelid level and was sutured. So these are the postoperative pictures in which hemostasis is made by the Silk 30. Lid reconstruction step 2 was done on 30th January 2026. Patient was draped, local anesthesia was given. So the basic aim of this procedure is the identification of the bridging and pedicle flap, and then separation of this bridging and pedicle flap to fashion a new upper eyelid, the ends of which were finely sutured with 6-0 vicryl to form a stable margin, followed by the lower eyelid donor side suturing. So these are the postoperative pictures. This is the postoperative picture 10 days back, after 1 month, after 3 months. So this is a picture when the patient presented to us, and this is a picture when we were done treating him. On the day of final follow-up, routine examination of the left eye was done, which suggested the visual acuity of 612. Cornea was clear, extraocular movements were intact, AC was quite informed, pupil was round and reactive. Lens shows some lenticular changes with normal fundal parameters. So a little bit should we know about the sebaceous gland carcinoma. It is a malignant aggressive tumor of the sebaceous glands, that is a gland of meibomian glands and the glands of Zeiss. Mostly it presents as painless, firm nodular swelling. There mostly a history of the recurrent lesion is present. For the treatment option, we have wide local excision with 4 to 5 millimeters of the tumor-free margins. We can also extend it to the orbital exentration depending upon the tumor mass, and we can also add adjuvant therapies. So my take-home message is that not every lesion is innocent. Unilateral chronic blepharoconjunctivitis is a red flag. Early biopsy saves life. Examination of lymph node is mandatory. Long-term follow-up is necessary. And as a physician, we should always maintain high suspicion, confirm it with histopathology, and act early. Thank you so much. Our next presenter is Dr. Aruj Fatma. She is second-year resident, and the topic is choroidal hemangioma. Assalamu alaikum. I am Dr. Aruj Fatma, second year PGR of Ophthalmology, Sir Ganga Hospital, Lahore. My patient is a 40 years old male, resident of Narowal, who came to us through OPD on 20th January 2026 with presenting complaint of dimness of vision in his left eye for last 1 month. Patient was in usual state of health 3 years back when he started developing dimness of vision in his left eye, which gradually progressed over last 1 month. It was not associated with any pain, redness of eye, or any discharge. There was no history of any flashes, floaters, halos, headache, or any visual field defects. His past ocular history, his past medical, surgical history was not significant. Patient is a non-diabetic, non-hypertensive, non-smoker, and non-allergic to any medication. He's a married man with 2 kids and have 2 siblings and belongs to lower middle class family. On general physical examination, a middle-aged man sitting comfortably on chair, well-oriented in time, place, and person, having normal vitals. General systemic examination was also normal. There is no anomaly detected on anterior and posterior segment examination of his right eye. While on left eye examination, he has best corrected visual acuity of counting fingers at 1 meter. His anterior segment examination of left eye was unremarkable. Posterior segment examination showed cup disc ratio of 0.3 with normal color disc, distinct disc margins, healthy neuroretinal rim. There is absence of foveal reflex and macular thickening of 4 to 5 disc diameters.
Vascular arcade and periphery is normal. Based on history and examination, my differential diagnoses are central serous chorioretinopathy, choroidal hemangioma, choroidal melanoma, choroidal metastasis, choroidal osteoma, choroiditis, tuberculoma, and posterior scleritis. Then he was advised some ocular and systemic investigations which came out as following. This is left eye OCT macula, showing large choroidal elevation, multiple cystic spaces in neurosensory retina at the level of macula and subretinal fluid. This is B-scan ultrasonography of left eye, showing large choroidal mass elevating macula with high internal reflectivity and no acoustic shadowing. Anechoic vitreous is seen and no signs of vitritis are noted. Fundus fluorescein angiography was also done. This is its early phase showing rapid lacy hyperfluorescence of choroidal vessels with 4 to 5 disc diameter thickening at macular region. This is mid phase showing intense diffuse hyperfluorescence and late phase showing persistent staining and diffuse borders. Systemic investigations including complete blood count, renal function test, liver function test, chest x-ray, ultrasound abdomen, all came normal. TB quantiferon gold test came negative. No signs of extraocular metastasis seen. So, based on history examination and investigation, my provisional diagnosis is choroidal hemangioma. Treatment options available. If lesion is small and asymptomatic, patient is put under observation with regular follow-ups, including B scans, fundus examination, and OCT maculas. But if the lesion is large and symptomatic, we have multiple options like pharmacotherapy, in which intravenous anti-VEGF injections are given, resulting in lowering edema and subretinal fluid. Then we have photodynamic therapy, which uses vertiporphin activated by laser light. This causes selective blockage of tumor vessels. Then we have laser photocoagulation. It is more suitable for extrafoveal lesions, less commonly used because of its risk of causing retinal scarring. Transpupillary thermotherapy, in which infrared diode laser is used to reduce tumor size. Radiotherapy and plaque brachytherapy. It is used for large tumors. My patient was given three intravenous injections of bevacizumab, 1.25 mg/0.05 ml monthly with regular follow-ups, including fundus examination, OCT macula, and B scans. Post-treatment, his best corrected visual acuity improved from counting fingers at 1 meter to 624. His anterior segment remained normal. On posterior segment examination, there was improvement in macular thickening and edema and resolved subretinal fluid. This is post-treatment OCT macula of his left eye. Recent advances focus on functional vision preservation. Number one, we have enhanced photodynamic therapy, in which half-dose vertiporphin is used, maintaining efficacy and lowering the risk of side effects. Number two, we have proton beam therapy, in which highly targeted irradiations are used for thick tumor, less commonly used because of it being expensive and its limited availability. Artificial intelligence is being investigated for automated diagnosis using OCT, detecting early recurrence, predicting response to photodynamic therapy. This is promising but not yet part of clinical practice. Now, what is choroidal hemangioma? Choroidal hemangiomas are benign yet vision-threatening vascular hematomas of posterior segment. Histologically, they comprise of cavernous vascular channels with normal endothelial cells and supporting fibrous septa. Two clinical patterns are seen: circumscribed choroidal hemangioma and diffuse choroidal hemangioma. So my take-home message from this patient is never trust a clear view in a patient with unexplained vision loss. OCT is the mandatory second eye for every ophthalmologist. The treatment wins the battle, but the follow-up wins the war. Thank you.
Our next presenter is Dr. Mehmet Tahir. She is fourth year resident, and her topic is rhino-orbital mucormycosis. Assalamu alaikum. I am Dr. Umaima Tahir, fourth year PGR MS Ophthalmology here at Sir Ganga Ram Hospital, Lahore. I'm going to be presenting a case of a 45 years old male resident of Okara, farmer by profession, who presented to us on 25th of August 2025 with the presenting complaint of outward bulging of right eye for last 2 months along with loss of vision. Upon taking history, there was gradual onset progressive proptosis of the right eye for last 2 months, which resulted in difficulty in opening the eye and restricted eye movements. It was also associated with facial pain and headache. 1 week after the onset of proptosis, gradually progressive loss of vision started along with purulent discharge. In systemic review, patient had uncontrolled diabetes mellitus. He had chronic kidney disease and had hepatitis C 8 years back. Rest of there was no other past significant history, and patient belonged to poor socioeconomic status. On general physical examination, there was palmar pallor, rest was unremarkable. On ocular examination, it was right NPL eye with proptosis, complete ophthalmoplegia, conjunctival congestion, chemosis, corneal melting. There were no posterior details visible. And there was a defect in the medial aspect of the upper lid through which purulent discharge was coming out. The left eye was unremarkable. Based on the history and examination, we had the following conditions in mind: orbital cellulitis, vascular lesions like cavernous sinus thrombosis, neoplasia, rapid onset thyroid eye disease, and non-neoplastic inflammation. We considered the following investigations. Routine blood work showed anemia and leukopenia, along with raised serum creatinine and reactive anti-HCV. CT brain and orbit showed right periorbital soft tissue swelling, extensive mucosal thickening in the right sphenoidal sinus, moderate mucosal thickening in the right maxillary sinus, and moderate opacification of right mastoidal air cells. CT paranasal sinuses suggested right orbital cellulitis, sinus mucosal disease, and right mastoiditis. The MRI suggested orbital cellulitis extending towards the malar region. Here is a film of the MRI image which is showing extensive edema and soft tissue swelling in the orbital and preseptal region extending towards the malar region. The MRV was normal. There was no evidence of venous sinus thrombosis. The culture report came for Klebsiella. ENT examination was also done. On endoscopy examination, there was inflamed nasal passageways and sinuses. Samples were sent for biopsy and culture. Biopsy report showed inflamed nasal mucosa and culture report showed E. coli. Based on the investigations, we had the initial diagnosis of orbital cellulitis, for which 2 weeks of IV antibiotics were started, but after 2 weeks, there was no significant improvement. Patient reported the additional complaint of loosening of his front teeth along with purulent discharge. Patient was also simultaneously advised diabetic control and nephrology consultation. Considering his recent complaint, consultation from the maxillofacial department was also done. As the patient condition was worsening, after discussion with ENT and maxillofacial departments, a joint venture was planned which included exenteration, FES, clearance of alveolar bone, and teeth. Here is a brief video of the procedure. We started the procedure with FES, functional endoscopic sinus surgery. Removal of the necrotic tissue from the nasal passageways and maxillary sinus was done. After removal of the necrotic tissue, continued the procedure with exenteration. A lid-sparing exenteration was planned, for which a conjunctival incision was given along the superior orbital margin. All the contents of the orbit were removed, which were mainly just necrotic tissue. The defect on the upper lid medial aspect was closed. Continued the surgery with partial alveolectomy. Through an upper vestibular incision, all the involved alveolar bone and teeth were removed. Thorough debulking of the maxillary sinus region was done. This is the incision being closed. Special thanks to Dr. Buck from ENT and Dr. Fatma from oral maxillofacial surgery for this surgery.
This is the alveolar bone tissues that was removed. Various samples were sent for histopathology. Maxilla sample revealed acute and chronic inflammatory cells and non-septate fungal hyphae, which provided us with the final diagnosis of rhino-orbital mucormycosis. The post-op management that was given was oral voriconazole. Dressing of the orbital cavity was changed after every 2 days. Regular follow-ups were done by the ENT and maxillofacial departments, along with regular monitoring of the LFTs and RFTs. Here is 2 weeks post-op picture of the patient. 1 month post-op picture of the patient, upon which further rehabilitation was planned, which included orbital prosthesis and palate prosthesis. Here at 6 months, with the orbital prosthesis attached to the spectacles and the palate prosthesis in place. Now, what is rhino-orbital mucormycosis? It is a rare, aggressive, often fatal disease of the orbit and sinuses caused by the fungi from family Mucorrhaceae, especially in patients with diabetic ketoacidosis and immunosuppressive states, in which vascular invasion by the fungal hyphae occurs, which results in occlusive vasculitis and infarction of the involved tissues. Its gold standard treatment is high-dose IV liposomal amphotericin B, aggressive surgical debridement of all the involved tissue, control of risk factors, especially diabetes. Oral antifungals like isavuconazole and posaconazole are also effective against it. We faced certain challenges in the management of this patient, first and foremost being the cost of the antifungal drugs, patient already having renal disease and those antifungals being nephrotoxic, and lastly, the rehabilitation process, which required access to multiple different centers. Overall, the management of this patient was done by the Eye and ENT department of Ganga Hospital, the oral maxillofacial surgery from Mayo Hospital, orthodontics department from Punjab Dental Hospital, and prosthodontics from Fatma Memorial Hospital. So what we learned from this case is that rapidity of diagnosis, reversal of the underlying predisposing factors, appropriate surgical debridement of infective tissue, and most importantly, multidisciplinary cooperation across different departments can be life-saving for the patient. Thank you. Now it's question answer session. You can ask question regarding the presentations. So all the presentations were well elaborated. So for further proceedings of this event, I'll request Dr. Sar Riaz, our associate professor, to come on stage. Thank you very much. I formally welcome Professor Dr. Hamid Mahmood Bhatt as a guest speaker. He is former principal of Services Institute of Medical Sciences, former professor of Fatma Jinnah Medical University, professor of ophthalmology at Services Institute of Medical Sciences, and professor of ophthalmology at Allama Iqbal Medical College, former dean for 4 years at the CPSP for FCPS students, and he also holds the office of as the director, medical director, educational director at the ORI Forum from the OSP platform. He'll be talking about the diabetic retinopathy, what to do about these patients. So over to Dr. Sara for the invitation by Dr. Professor Hamid Mahmood Bhatt sahab. Aye. Assalamu alaikum. A warm welcome from Fatma Jinnah Medical University to all the attendees and professors, our very seniors. हमें बहुत ज़्यादा खुशी है सर चौधरी लतीफ़ साहब आपके आने की. हम बहुत अरसे से वेट कर रहे थे कि आप अपने प्राइमरी इंस्टीट्यूट में आए. सर हामिद भट्ट साहब, शफीक साहब, कासिम लतीफ़ साहब, और हमने कहा था ऑक्यूलो प्लास्टिक के भी हैं, तो हम कह रहे थे अल्लाह करे कि सर इमरान साहब आ जाएं. तो वी आर वेरी हैप्पी. और सर इसमें एक थोड़ा सा कमेंट में देना चाहूँगी कि ये जो हमने अभी राइनो
ये म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट था। ये जो पेशेंट था, इस पे बस थोड़ा सा कमेंट ये कि ये पेशेंट का HP था 6 and 7, 500 इसकी ब्लड शुगर्स थी, और इतना ये डिरेंज्ड हालत में आया था कि इसको हमारा कोई मेडिकल डिपार्टमेंट भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लेने के लिए रेडी नहीं था। एंड आई ऑल्सो वांट टू अप्रिशिएट डॉक्टर फरहान कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा, हमने इसके ऊपर एफर्ट भी किए। फरहान ने कहा कोई बात नहीं मैडम, करते हैं। मैंने कहा इसको करो, नहीं तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि जितनी इसकी कंडीशन थी, जो उसकी सिस्टेमिक थी, फिर मेडिकल वालों को मिला के हर एक को कर के हमने इधर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी। हमने कहा इसको हमने बचाना है किसी तरह। तो वी आर सो हैप्पी कि ये पेशेंट बच गया, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हम सबको पता है कि इतनी डी रेंज के साथ बचते नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी सर, हम सर हामिद साहब को इनवाइट करते हैं। इनको किसी उसकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सर का जबरदस्त लेक्चर है। प्लीज सर आए और अपने वर्ड्स ऑफ विजडम बताएं। थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Professor Lateef Chaudhry Saab, patron OSP, Professor Qasim Lateef, President OSP Lahore, Professor Imran Akram Sahaf, Professor Shafiq, and Professor Arshad. The residents, the faculty of Fatima Jinnah Medical College sitting here, ophthalmology department. I think I have half an hour, Arshad Saab. अगर इधर मेरे साथ कोई इसको फॉरवर्ड करने आ जाए तो मैं ज़्यादा फ्लुएंट हो जाऊंगा। This topic has been very dear to my heart, और the presence और कासिम साहब की, that's a huge presence. जी, next. I'll be just talking about the burden of blindness firstly. Then my main interest would be, and message would be, to compare pan-retinal photocoagulation with intravitreal injections. I think for the trainees, it's very, very vital, very, very important. It's very humbling to note that in the World Report of Vision, दुनिया में 1-2 बिलियन लोग विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं, 2 बिलियन, और 1 बिलियन ऐसे हैं जिनमें ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेबल है। And diabetic retinopathy comprises 4% of the overall blindness. We are in the WHO, we are in the region of Middle East and North Africa. कुछ स्लाइड्स मैं तेजी से गुजारूंगा ताकि हम असल टॉपिक पे पहुंच सके। नेक्स्ट। And we are projected in 2050 for a 92% increase in the incidence of diabetes, just behind Africa. Or 31% age standardized diabetes prevalence, and projected to increase to 34% in 2050. तो इसका मतलब है हमारे पास 3-3.5 करोड़ डायबिटिक्स का बर्डन है। We all know chronic hyperglycemia causing thickening of basement membrane, parasite loss, mitochondrial dysfunction, and resulting in proliferative diabetic retinopathy, diabetic macular edema, and neurodegeneration. VEGF, for the trainees who are sitting here, is a cytokine, therefore producing inflammation and sequelae. Okay, next. So the disease is mild, moderate, and severe, and in proliferative, it is vision threatening. The classification is well known to all of you, so I'll just pass it on. But you do remember, high risk proliferative diabetic retinopathy and advanced proliferative. हम लोग यहाँ पे खड़े हैं स्पेक्ट्रम में, बहुत सारा burden of blindness diabetes का हमारा इस यहाँ पे है। हम शुरू में तो अभी पेशेंट्स को कैच ही नहीं कर रहे। Next. And the leakage that you show, you see in the non-proliferative and
the proliferative showing the neovascularization disc and neovascularization elsewhere. One sign that I want the trainees to notice is whenever you have neovascularization, you have a very big capillary shunt in the retina. का मतलब ये है कि blood directly arterioles से venule and therefore you have venular dilatation, and that is the reason you get venous beading, venous tortuosity. तो अगर आप पाउडर में जैसे कासिम हमारे साथ जिन्ना में होते थे और खुद भी देखते थे और फिर सारा फॉरेन ट्रेनिंग हो रहे थे, आप भी देखें. Do look at the venular dilatation. अगर आपके पास frank NV नहीं तो that very closely. असर साहब तशरीफ लाए हैं my class. Thank you sir. It is also very humbling कि सारी स्टोरी को एक 1.5 सेंचुरी किया. पहली दफा रेटिना we could actually see in 1850s. Insulin was discovered in 1900s. Classified diabetic retinopathy in 68. और यहाँ से हमारे कैरियर शुरू हुए थे ETDRS और DRS से, और हमने सीखा कि जी पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन करें और फोकल फोटोकोएगुलेशन करें. That is was the gold standard. And then also the UK PDS and DCCT giving us evidence that blood sugar and blood pressure is even more important than the treatments that we are opting for directly. और फिर 2010 में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया एंटी VEGF का. यहाँ मुझे घड़ी नजर नहीं आ रही तो हाफ टाइम हो तो मुझे बता दीजिएगा. So what I'm trying to show here is हमने अपने कैरियर में जो देखा वो मुझे याद है एक छोटी रॉबिन्स होती थी और उसके एक पेज में लिखा हुआ था कि एंटी VEGF पे रिसर्च हो रही है, तो ये we are thinking that it might be the drug of the future. And look and behold, now we are actually standing here and talking what to choose between the two options. So the DRS and ETDRS gave us pan-retinal photocoagulation and focal and grid photocoagulation for DMO. ये सारा background है so that we can rapidly build up the momentum. Next. So this is what we got through DRS, ETDRS, हमारे careers, 20 years down the line. But now the point which I want to make is we are actually going back full circle. This is where we started. And so the gold standard is still there. Next. A little applied for the trainees. Next. You know, the circuit of the retina, photoreceptors, bipolar cells, ganglion cells. Next. And the capillary plexus, superficial, intermediate, and deep. Next. और सबसे humbling thought है वो ये है कि the highest oxygen consuming tissue in the body, which is the rods and cones, more than brain, per gram tissue, more than brain, has no direct blood supply. Its nature की आप देखें distribution or uniqueness, or they get their nutrition that high metabolic rate. और आपको याद होगा कि थोड़ा सा वो OCT की तरफ भी अभी आएंगे. इमरान अकरम साहब हमेशा बेसिक्स को बहुत हैं. You see the bright white line in OCT, outer 4 layers जो देखते हैं, that is because of the high density of mitochondria. And that is where oxidative phosphorylation takes place. जहाँ पे mitochondria होंगे और dense होंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा oxidation consumption होगी. Okay. Or I went through a paper so nicely illustrated in a cat eye. The research की वो देखें dimension that the highest oxygen consumption in light and dark by the rods is shown experimentally through the pre-retinal. Next. Next. अब थोड़ी सी basics मज़ीद. Next. We are talking of argan blue-green and melanin being the target pigment. हमने blood को avoid करना है directly photocoagulate. And then you have continuous lasers and these on-off micropulse lasers. लेकिन do remember one practical point applied. अगर आप load energy में conventional photocoagulation करते हैं carefully, तारा, अगर आप low photocoagulation करते हैं
तो आपके इफेक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट माइक्रो पल्स वाले, तो इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और दिस इज वेरी डियर टू मी। अगर आप बर्न में आपने करना क्या, आपने डिस्ट्रॉय करने हैं रॉड्स एंड कोन, रॉड्स कोन्स तो, एंड देन if you give a heavy burn, so you're going to destroy the bipolar cells and even the nerve fiber layer and produce a scotoma. तो अभी मैं जब प्रोटोकॉल एस के रिजल्ट्स पे आऊंगा तो मैं इस बेसिक पॉइंट को दोबारा टच करूंगा आपके साथ, खास तौर पे वीआर के फेलोज पे। और एक टर्म है इरेडियंस, एक टर्म है फ्लुएंस। तो फ्लुएंस इज एनर्जी डेंसिटी, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, और द स्पॉट साइज इज द एरिया। तो अगर आप स्पॉट साइज फिक्स रखते हैं, जैसे पीआरपी में 200 है या 300 है, या हमारे लेजर्स की वो कैलिब्रेशन नहीं होती तो हम और छोटा कर लेते हैं, बट व्हेनेवर यू रिड्यूस द स्पॉट साइज, प्लीज फर्स्ट रिड्यूस द पावर। पावर इज द वेरिएबल जिसको आप जरा जरा सा करके सिर्फ माइल्ड बर्न लेना है आपको। होता क्या है कि वो लेजर नहीं आ रहा ना, आपका पेरिफेरी में नहीं लेजर लग रहा, आप स्पॉट साइज छोटा करते हैं, पावर को छोड़ ही देते हैं, वहां 4 टाइम्स हाई, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 4 टाइम्स हाई डिलीवरी होती है एनर्जी की, और यू एक्चुअली प्रोड्यूस, एक्चुअली यू कैन एक्चुअली पॉप अ बर्न एंड होल भी कर सकते हैं रेटिना में, और वहां से सीएनवी शुरू हो जाएगी। सो डू रिमेंबर दैट। Again, the burn intensity should actually be just blanching. वापस जाएं, और आपका ये वाला बर्न barely visible, that is the most important parameter for the trainees to, आपने वहां सफेद नहीं करना रेटिना को, that is basic. Next. और दिस इज अ बर्न विच वी डोंट वांट। हाँ, कासिम मुझे सेकंड करेंगे कि अगर आपने रेटिनोपैक्सी करनी है, होल की साइड पे बैरियर लगाना है, तो शायद इस तरफ, उस वक्त भी मैं कहूंगा इस पे ना जाएं, इधर ही रहे। नेक्स्ट, एंड और पीआरपी करते हुए आपने डिस्क से एक डिस्क डायमीटर दूर रहना है। यू एक्चुअली विल फाइंड पीपल विद हैवी बर्न्स अराउंड द डिस्क। तो इट इज सच अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन कि आप जो ब्लाइंडनेस डायबिटिक रेटिनोपैथी ने शायद पता नहीं 10 साल में करनी थी, आपने फौरन कर दी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वापस जाएं, और यू हैव टू स्टे 2 डिस्क डायमीटर अवे फ्रॉम द डिस्क ऑल्सो अप टू द इक्वेटर। अब आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपने यहाँ पे वो माइल्ड बर्न्स लगा के 20% ऑफ द रॉड्स डिस्ट्रॉय कर देने हैं। तो एक स्टैंडर्ड पीआरपी में तकरीबन 20% रॉड्स आर किल्ड, डिस्ट्रॉयड, डिवाइडेड। So how does the laser work? I found this paper very interesting. Long research, but he actually did laser burns in cat eyes, और फिर हिस्टोपैथोलॉजी करके शो किया दिस इज एन आइडियल बर्न, जो इमरान साहब अभी पॉइंट आउट कर रहे थे। यू डिस्ट्रॉय only the outer segments of rods and cones and maybe their nuclei, but you spare the bipolar cells and the ganglion cells. That's the whole idea. How does it work? The oxygen actually goes through that scar tissue into the inner retina, because this retina is also compromised. यहाँ capillary ड्रॉप आउट एरियाज हैं, जो मैंने आपको 3 नेट्स दिखाए थे ना, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप, वो तो ब्लॉक हुए हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई एंड अदर थिंग, और फिर आउटर सेगमेंट को भी डायरेक्टली मिल जाती है। नेक्स्ट, एंड देन प्री रेटिनल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से उसने पीआरपी वाली आईज में शो किया कि प्री रेटिनल ऑक्सीजन जो है उसका ग्रेडियंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, और I'm very fond of this. Next, and actually from Turkey, that the venular dilatation and the arteriolar dilatation after a successful PRP, 3 से महीने onwards, should actually stabilize, कम हो जाना चाहिए। So that shunt
has actually, मैं कई दफा पार्ट 2 के एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा था हाउ डज इट वर्क, हाउ वो कहते हैं जी ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिफ्रैक्शन हो जाती है, मैंने कहा कैसे, तो इस पे हम फेल नहीं करते थे बट दैट्स द होल कॉन्सेप्ट यू नो। तो क्लिनिकल मॉनिटरिंग और जो क्लिनिकल साइंस हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंड। अगर आप उसका वीनल डायलिटेशन को मॉनिटर करें और जो न्यूवास्कुलर डिस्क और एल्सवियर को तो रिग्रेस करना एक वो तो क्या उसको तो आप देखेंगे ही, बट दिस इज ऑल्सो गुड साइन। नेक्स्ट, 3 main concerns and challenges were PRP. One, worsening of diabetic macular edema, peripheral vision compromise, and night vision compromise. And then came 4, and at the same time of the VEGFs, anti-VEGFs, you had the OCT. Next, next, next. Okay. And this gave us the classification. पहले ETDRS ने हमें क्या classification दी थी? DCSE में clinically significant macular edema, और वो आपकी बुक्स में लिखा था 1, 2 and 3 मैकुला इतने माइक्रोन है। But the OCT first time gave us CIDME and non-CIDME, और उससे और एक और क्वेश्चन जो है clinically significant macular edema वाले पेशेंट 6 भी हो सकते हैं। This also keep this in mind because the students have a misconception that, और लेकिन इसमें CIDME में तो डेफिनेटली विजन कम होगा। और दूसरा असद वुड बेयर मी आउट, हम जब PRP करते थे तो पेशेंट से कहते थे 2-3 लाइंस आपकी ड्रॉप हो जाएंगी, फिर 3 से 4 महीने में खुद ही ठीक होंगी, तो डोंट गेट वरीड। बट विद द एंटी VEGF फर्स्ट टाइम वी कुड एक्चुअली टेल द पेशेंट 2-3 लाइंस आपकी अच्छी हो जाएंगी। दिस वाज अ टोटल रिवर्सल ऑफ व्हाट यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट टू द पेशेंट। नेक्स्ट, और जब भी फोकल फोटोकोएगुलेशन करनी है, do remember that the lipid ring is actually at the border of dry retina and wet retina. ठीक है, नेक्स्ट। अब हम आते हैं असल बात जो मैं करना चाह रहा हूँ। वो 2004 से 2022 तक many anti-VEGFs came, and I'm not going to detail in the interest of time. Next. But the 3 main, this was not an antibody to start with. And then you have bevacizumab, ranibizumab, which is a fragment, and aflibercept, which is a fusion protein. Next. And then you have the target tissues and anti-VEGF affinity. Next. And a lot of protocols came after. The DRS was then followed by DRCR net, and a lot of protocols. Next. But this is my concern. आजकल के टाइम और दौर में हम, आपके पास प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट आता है, आप क्लिनिक में बैठे हैं, अब आपने फैसला करना है मैंने इसको पहली ट्रीटमेंट क्या ऑफर करनी है, एंटी VEGF लगाऊं या PRP की तरफ भेजूं। अब अनफॉर्चुनेटली वी हैव शिफ्टेड आवर थिंकिंग कि इसको तो एंटी VEGF ही लगा और फिर उसके बाद एंटी VEGF ही लगाते रहना है। दिस इज वेयर वी हैव ब्रोकन द एविडेंस चेन। दोनों मोडेलिटीज की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। वी हैव टू नो व्हाट टूल वी हैव टू यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। सो दिस वाज एन एलिगेंट ट्रायल बाय अ ग्रुप। अगेन नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम दैट आई वुड लाइक यू टू, इस पे हम 2-3 मिनट लगाते हैं। व्हाट डू यू सी हियर? Two lines, white line, the blue one showing the ranibizumab, the yellow showing the PRP, और 5 साल का फॉलोअप है, और 5 साल के बाद दोनों का मीन विजुअल गेन of ETDRS letter. This is not a Snellen chart, this is an ETDRS chart which is scored on a logarithmic scale. तो एक एक लफ्ज को, जैसे हम किसी को कहते हैं ना ये 6-6 है, ये 6-6 पार्शियल है, अब पार्शियल को कैसे डॉक्यूमेंट करूं मैं, बट ETDRS चार्ट टेल्स यू एक्चुअली लॉग स्केल पे मैंने कैसे। तो 3 लेटर गेन हेयर दोनों ग्रुप्स में, ये रेनीज में 5 साल बाद दोनों बराबर है। दिस ग्राफ एक्चुअली प्रॉम्प्टेड मी टू गिव अ टॉक बेस्ड ऑन एविडेंस। ये सबूत है ना, साइंस तो मनवाती है अपने आप को, आप ना माने। एंड देन द एडजस्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, मैंने बहुत सारी स्टेटिस्टिक भी पढ़ ली इस चक्कर में।
You see the confidence intervals are not showing statistically significant difference. बहुत wide confidence, जितना confidence interval wide होगा उतना uncertainty ज़्यादा होगी और unreliable होगा, precise नहीं होगा data. और देखें p value भी 0.68 है. तो ये box जो है ना, जो PGs हैं इस वक्त, they have to go back, find that reference, वापस जाएं. I would like that this reference is read by the PGs, especially the VR ones. या लेक्चर मैंने आपको दे दिया, तो आप इसको पढ़ें एंड फाइंड इट आउट. वापस जाएं, सॉरी नेक्स्ट. और ये वाले जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं, ये इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स हैं. बस इतना ही काफी है फिलहाल. नेक्स्ट. और आप फिर देखें विजुअल एक्टिविटी स्कोर दोनों ग्रुप्स में बराबर है 5 साल के बाद. विजुअल फील्ड में ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 330 डेसिबल्स एंड 527 डेसिबल्स. एंड डायबिटिक मैकुलर एडीमा, यस. तो वापस जाएं, वापस देख. शुरू की जो आम थी ना 2 साल की, उसके अंदर देयर वाज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ. शुरू में उनकी विजन गेन ज्यादा अच्छी थी, एंड द ओनली रीजन वाज दैट इट वाज कंसिडर्ड अनएथिकल टू डिनाई द पीआरपी ग्रुप द एंटी वेजेस. तो उन्होंने क्रॉस किया स्टडी को कि अगर पीआरपी करने से पहले मैकुलर एडीमा या पीआरपी करने के बाद मैकुलर एडीमा हो गया तो डिनाई ना करो. सो दिस इज एथिकल अप्रूवल ऑफ द ट्रायल. एक ऐसा ट्रायल है ग्लोकोमा का जो आज की दुनिया में कभी अप्रूव ही ना हो, और वो ट्रायल है EMGTT, अर्ली मैनिफेस्ट ग्लोकोमा ट्रीटमेंट ट्रायल. उसमें एक आर्म में ट्रीटमेंट दी ग्लोकोमा के पेशेंट और दूसरी आर्म में ट्रीटमेंट नहीं दी, उनको कंट्रोल ग्रुप बना दिया. और आजकल की दुनिया में एथिकल अप्रूवल के बगैर ट्रायल नहीं चलता. और दूसरा एक पॉइंट जो खास तौर पे आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि आई डोंट नो वेदर यू आर गिविंग इंट्राकैमरल इंजेक्शंस और नॉट, बट इंट्राकैमरल एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो इस एस्कैरिस का ट्रायल था, या सॉरी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कैथरेक्ट सर्जरी का, उन्होंने 14,000 पेशेंट्स रिक्रूट किए थे. उसमें से शुरू में ही चंद हजार के बाद उन्होंने ट्रायल बंद कर दिया बिकॉज द एविडेंस वाज सो रिमार्केबल एंड सो अगेंस्ट द डिनायल ग्रुप दैट दे थॉट इट्स नॉट एथिकल टू कंटिन्यू द ट्रायल. तो द ट्रायल वाज स्टॉप्ड फॉर द इंट्राकैमरल एंटीबायोटिक. नेक्स्ट. अब जरा स्पीड में चलते हैं. नेक्स्ट. अच्छा नहीं, वापस जाए. एक और चीज, 9 इंजेक्शन लगाए पहले साल में और 5 साल में 20 इंजेक्शन लगाए, वो उन ग्राफ्स को स्टेबलाइज करने के लिए. तो पहले ये सोचें कि बर्डन ऑफ कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, पेशेंट की विजिट्स, हाउ डज इट बैलेंस इट आउट. नेक्स्ट. और ये सबसे हम्बलिंग, अगर आप बीच में इवेस्टिन 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, उसको बाद भेज दिया उसे, तो वो फिर आएगा कासिम के पास, उसको रेटन है ऐसे उसको होगा और आप फिर उसको खोल ही नहीं सकते. तो माई कंसर्न इज कि इवेस्टिन या एंटीविट्रियल लगाएं जरूर, प्रॉपर सेटिंग में लगाएं और उसको पीआरपी ना डिनाई करें, उसको फोकल फोटोकोएगुलेशन ना डिनाई करें प्लीज. दैट इज द मैसेज. और नेक्स्ट आगे चलें. आगे. दिस वाज अ वेरी नाइस स्टडी जिसमें उसने ये कहा कि एंटी वेजेफ्स पे जो कैपिलरी ड्रॉप आउट के एरियाज हैं, अल्ट्रा वाइड फील्ड एफएफए पे and then the OCT angiography phase, do not reverse. The capillary dropout is permanent. So what do you do in PRP? You actually destroy these ischemic areas. Again, ischemic area produces anti-VEGF. The dead tissue does not produce infarcted tissue. Again, Imran साहब वाली बात, ischemia और infarction में फर्क पहले करें. आपने वहां infarction कर दिया, you've killed the unnecessary rods and cones. And therefore, you have achieved a new balance. तो अब ये ischemic area, तो anti-VEGF से you put a brake, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी स्लो हो गई, उसके बाद ब्रेक छोड़ी आपने, गाड़ी फिर फुल स्पीड जा रही. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की ह्यूमन माइंड्स अंडरस्टैंड एनालॉजीज बेटर. अगर मिसाल दूंगा तो वो याद रहेगी. तो आपने एंटी वेजेफ लगाया, सप्रेस दी एंटी वेजेफ, एनवीडी भी जरा अच्छा हो गया, मैकुलर एडीमा भी अच्छा हो गया, विजन भी अच्छा हो गया, हो गया, तो एंटी वेजेफ इज वर्किंग. बट इफ द पेशेंट डज नॉट कम बैक and the whole thing actually proliferates. Next.
अब ये मैं स्पेशली गिफ्ट करूंगा आर्टिकल, यू कैन से इट अ गिफ्ट टू द वीआर फेलोज। जब मैंने वहां तक टॉक डेवलप की हुई थी, मैंने इस्लामाबाद में भी, कराची में भी दी, एंड आई एम सो फॉन्ड ऑफ दिस टॉक नाउ, आई हैव टू, दिस टॉक हैज ग्रो। आप खुद भी लेक्चर जब लेते हैं ना, जाके देखें, आप जब अगली दफा लेक्चर देते हैं, आप वो ग्रो करता है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्री, यू ग्रो यू ग्रो यू ग्रो। तो देयरफॉर ये मैं जब मुझे टास्क दिया, वो मेरा ने होमवर्क दिया, तो आई एक्चुअली I had to really work hard on it. So I found these two articles. I earned these two articles, जो कि भी मैं क्लोज में सिर्फ रैपिडली आपको बताता हूँ। वन, देखिए काम कितना करते हैं वो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड रिसर्च, उन्होंने सारे एंटी वेजेफ और पीआरपी के ट्रायल्स सब का एनालिसिस कर दिया, एंड दिस इज मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू। तो उसमें उन्होंने नतीजा क्या निकला, नेक्स्ट, सारे ट्रायल्स whatever, DCR, W, A, B, C, D, whatever. And what they found out was, next, that only clarity, Proteus to some extent, protocol S, protocol W, इनके bias नहीं थे, low थे, तो they're the most reliable trials, robust scientifically, bias कम है। RCTs जब भी उन्हें bias कम से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है जो चीज़ published है उसको भी अप्रेज करें, ये नहीं है कि ऑप्थेल्मोलॉजी के जर्नल में आ गया या एजीओ में आ गया या पीएमजे में आ गया तो इसको घर पे आखिर हो गया। दिस इज नॉन एज क्रिटिकल अप्रेजल। देयर आर टूल्स अवेलेबल टू अप्रेज कि क्या पब्लिश हुआ है, क्या वो रिलायबल है, प्रिसाइज है। नेक्स्ट, और वो सारे ट्रायल्स इन वन फिगर, जस्ट वन फिगर, ऑल दोज ट्रायल, और सिर्फ प्रोटोकॉल एस 5 इयर्स पे आ रहा है, ये बाकी सारे 1-1, 2-2 साल के हैं। नेक्स्ट, और लुक एट दी कंपैरिजन, और ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं, जीरो इफेक्ट, दोनों पीआरपी रेनिजुमैब कंबाइंड शोइंग ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट। नेक्स्ट, और ये एक स्लाइड देखने वाली है, देखें, दोज आर फेवरिंग द एंटी वेजेफ। हमें पता है कि डायबिटिक मैकुलर एडीमा में बेहतर है, हमें पता है कि ऐसी आईज में विट्रेक्टिव का इंसिडेंस कम होता है जिनमें एंटी वेजेफ के ऊपर उन्हें रखते हैं आप। हमें पता है कि उनमें विट्रियस हेमरेज भी रिलेटिवली कम होता है अगर आप उन्हें मेंटेन कर रहे हैं, ये नहीं वन ऑफ नहीं है लगा के भेज दें। नेक्स्ट, और एडवर्स इवेंट्स किसी ट्रायल में भी उन्होंने कंपेयर नहीं किया, तो उन्होंने they are just random, they can happen here or there. Next, the conclusion was even more sobering. Anti-vascular endothelial growth factor injections, can you read it for me so that I can rest? इधर आगे बढ़े, इससे पढ़े, इसको बस इसको पढ़ लें। I frequently do that. Ready? Antivascular endothelial growth. इसको देख के इधर है, इधर आप पढ़िए। Antivascular endothelial growth factor injections reduce vision loss when compared to pan-retinal photocoagulation, but the benefit is small and unlikely to be clinically meaningful. Antivascular endothelial growth factor may have greater benefits for preventing complications such as macular edema. Observational studies extending follow-up beyond the 1-year duration of most trials are needed to investigate the longer-term effects of repeated antivascular endothelial growth factor. Excellent. Very nice, very confident. So the macular edema is a definite go. Next. और ये nice guidelines है 2025 की, इसका भी ये भी इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़े लोग जाके। We believe these actions can re-establish the central role of laser treatment in treatment of proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular edema. UK वाले और Americans भी they have lost the trail. वो सब अच्छा नहीं है, वो उनकी गलतियां जो हमसे ज्यादा कॉस्टली होती हैं। और and encourage personalized treatments for people with proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular edema. So I'm very close to the ending the talk. Next please. Okay. और इसमें भी मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इसकी समरी ये है कि प्रॉपर एनवीडी एनवीई डॉक्यूमेंटेड है, फर्स्ट ऑफर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी पीआरपी,
diabetic macular edema on center involving clinically significant या non CIDME focal photocoagulation. अगर क्रीप कर रहा है सेंटर में तो पहले लगा के उसको थोड़ा ड्राई कर लें पैच को. उसका फायदा ये होता है कि अगर वो रेटिना पैच ड्राई हो जाए ना तो आप लेजर बर्न भी तो मॉनिटर कर सकते हैं ना. मैंने लगाया क्या है, अगर आप धुंध में से ही लगा रहे हैं देख रहे हैं तो यू विल प्रोड्यूस अ हैवी बर्न. और फोबिया के इर्द गिर्द अगर आपने बर्न लगा दिया तो इससे बड़ी डिससर्विस कोई नहीं है. दिस इज अ चैलेंज. देखिए एक पेशेंट अंधा हो रहा है, हो जाएगा. तो 10 साल में होना तो आपने फटाफट चेयर से उठा के कर दिया. दैट इज मेरे लिए तो इट इज अनएक्सेप्टेबल एंड दैट इज द अवेयरनेस दैट वी नीड टू वर्क ऑन. और फिर सिर्फ वापस जाए क्योंकि वहाँ एनएचएस में क्वालिफाइड है तो वो कहते हैं सिर्फ 400. मैंने शहजाद शफकत हमारे पास आते हैं, माई क्लास फेलो, तो वो 400 माइक्रोन से ऊपर होगा ना अगर सीआई सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट तो वो क्वालिफाई करेगा ट्रीटमेंट के लिए एनएचएस से फ्री बिकॉज इट्स कॉस्टली ड्रग. 400 माइक्रोन 390 भी होगा ना तो नहीं लगेगा उसको. तो दैट इज अ कैच. नेक्स्ट और नेक्स्ट. अब एक लास्ट स्लाइड सर की इजाजत से. सर ने बहुत मुझे सर पेशेंटली सुना है, इतनी देर बैठते नहीं सर. थैंक यू सर फॉर सिटिंग थ्रू. और एक आपकी बात भी मैंने रिपीट करनी है अभी जो, और जहां हम विट्रेटना में आप खड़े हुए हैं वो भी रिपीट करनी है, कासे भी बैठे हैं. तो वी मस्ट प्रमोट विट्रेटनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड अपनी गाइडलाइंस बनाएं. इन जो आप उसके मेंबर्स हैं, इन नई एविडेंस को शामिल करें गाइडलाइंस में, पढ़ें और चेंजिंग एविडेंस को इनको. The only thing which is living, it's everything that we do is living. अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो we'll just be practicing something. और लेजर ट्रेनिंग कोर्सेज और सिंपोजिया नेक्स्ट. और सबसे ये हम्बलिंग है, देयर इज नो कंसेंसस ऑन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी. 100-150 साल हो गए हैं जिसमें पीआरपी करनी है, अभी भी लोग नहीं कर देंगे. मैं एट द एंड एक बात करना चाहूँगा. मुझे कराची केराफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हमने ओएसपी की बहुत सारी मीटिंग्स पे सीखी, बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स पे सीखी. तो वो आया स्टेज पे तो उसने यही सारा एंटी वेजेफ की बात की, ये है वो है. तो मैं ऑडियंस में बैठा था, मैं खड़ा हो गया, मैं कहता एक्सक्यूज मी, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग सिटिंग हियर एंड यू आर सेइंग दैट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज एंटी वेजेफ, बट आई थिंक इट्स पीआरपी. तो वो उसने उस स्टेज पे तो जाहिर है इतना ही सख्त सवाल इतनी देर ही सुन सकता था. वो बनाया जब मेरे पास से गुजरा ना, तो मैं खड़ा था फ्रंट सीट पे, तो मेरे पास से गुजरा तो मुझे कहता है वेल दैट इज द अमेरिकन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. कि एंटी वेजेफ हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में गुंजाइश है तो एंटी वेजेफ लगाए जो, लेकिन स्टैंडर्ड पीआरपी ही है. नेक्स्ट. और अभी भी दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड. 2020 रॉयल कॉलेज, 2020 प्रेफर्ड प्रैक्टिस पैटर्न्स ऑफ अमेरिकन एकेडमी, 2020 नाइस गाइडलाइंस, 2023 सब कहते हैं पहले गोल्ड स्टैंडर्ड. नेक्स्ट. और प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शरी प्रिवेंशन यू ऑल नो बेटर देन मी. नेक्स्ट. और द WHO मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड पीपल सेंटर्ड आई केयर. एक चीज जो मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा वो ये है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एक पर्सनल एडवाइस है पेशेंट को, एक सिस्टम पूरा. हम सारी उम्र यही सुनते रहे कि ये ठीक होने चाहिए तो फिर ही आगे चल सकेंगे. नेक्स्ट. तो या टेक होम मैसेजेस, पीआरपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एनी को एग्जिस्टिंग डायबिटिक मैकुलर एडिमा. दोबारा पढ़वाऊंगा आपसे. आप बताएंगे तो इनको मेरे से पहले PRP is the gold standard first-line treatment for proliferative diabetic retinopathy. Any coexisting DME in PDR requires combination treatment with anti-VEGF. PRP-induced diabetic macular edema can be prevented by giving anti-VEGF before PRP. Focal photocoagulation is the treatment of choice in CSME and non-CIDME. A combination approach tailored to the patient clinical scenario is prudent. AI in diabetic retinopathy screening programs has a prompt. नेक्स्ट. और ये पिक्चर मैंने कैरोफ्ट के एंड पे अर्न की. जब मैंने ये सारी टॉक दे दी ना, तो नन अदर देन द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट जायंट्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, प्रोफेसर सालेम अहमद साहब ऐसे ही आगे बैठे हुए थे.
तो जब मैं नीचे उतरा ना, तो कंक्लूडिंग सेशन में उन्होंने डिस्कशन वगैरह की, तो वो उठ के आगे ना सोटी ऐसे कर करके ना स्टेज पे आगे खड़े हो गए। कहते हैं ये जो हामिद ने बातें की है ना, मुझे स्टेज पे आके बात करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने फिर ये टॉप अप किया इस बात को, और उन्होंने कहा कि हम जिस तरफ चल पड़े हैं उसको, सो इट्स अ वेरी पावरफुल, आई अर्न दैट पिक्चर आउट ऑफ दैट टॉक। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिस इज व्हाट यू हैव टू कैरी ऑन, द ट्रेडिशन ऑफ ऑन गोइंग एक्सलेंस। नेक्स्ट, और द सेम ओल्ड एबीसी। अपने पेशेंट, मैं अपने पेशेंट्स को अब जरूर कहता हूँ डायबिटीज को, मैं पिछले दिनों एलआरबीटी में गया था, ये फोरम जैसे अरशद साहब और जावेद साहब और कासिम, द मोस्ट पावरफुल फोरम इज ओएसपी एंड सीपीएसपी, और हम इसको वैल्यू नहीं करते, हम कहते हैं गपशप का नहीं। दीज आर पावरफुल नॉलेज नेटवर्क्स। मैंने बहुत कुछ इस पे सीखा है, आप भी सीखेंगे। तो मैं अपने पेशेंट से अब कहता हूँ ओपीडी में, अपना हीमोग्लोबिन A1C 6 और 7 के दरमियान रखें, 5 पे ना लाएं, लेकिन कोशिश करेंगे 6 और 7 में। और वो ये सारी एविडेंस है यूके पीडीएस और डीसीसीटी की। और ब्लड प्रेशर, एक दफा महमूद अली मलिक साहब एक जगह टॉक दे रहे थे, वो कहते थे ब्लड प्रेशर मल्टीप्लाइज द ब्लड शुगर एनॉर्मली, दोनों एक दूसरे को जरब देते हैं। तो आप एक दफा पेशेंट जरूर कहेंगे अपना ब्लड प्रेशर 130/90 रखो, और अपनी हीमोग्लोबिन A1C 6 और 7 रखो, और हर 3 महीने बाद कराओ। और एक चीज मैं और उनसे कहता हूँ, आपके रेड ब्लड सेल्स की उम्र 120 दिन है, इसलिए 3 महीने बाद कराएं। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना सिंपल, उसमें वो उसने एफआरसी ऑफ वाली नॉलेज या रेफरेंस या मेटा एनालिसिस नहीं मैटर करता। यू हैव टू टॉक इट आउट विद योर पेशेंट। नेक्स्ट, एंड वी मस्ट थैंक अल्लाह फॉर बीइंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मुझे अभी सिम्स की एक स्टूडेंट याद है, ये फैंसी ड्रेस शो होता है ना, तो वो छोटी सी स्टूडेंट थी, वो आई हमारे जब मैं सिम्स में था, तो ऐसी बात करते करते तो मुझे कहती है, मैंने ऐसी बात की अबाउट दी 14th ऑफ अगस्त, तो मुझे अभी याद हुआ, कहती है सर अगर पैट्रियटिज्म नहीं है ना तो कुछ भी नहीं। सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, तो आई कैरी दैट। और मैं एक सर की, जो जिस वक्त सर आपने शुरू की थी ओएसपी, मुझे याद है मैं इनके पीछे पीछे पहुंच गया, ब्रुक्स मैक्वीन आपके इधर भी आए थे सर, और आई वेंट टू ड्यूक, तो वो कहते थे कि सर का कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक अटैची केस लो, उसमें कपड़े डालो, हवाई आपका टिकट लो, और जहां काम हो रहा है वहां पहुंचो, दुनिया में कहीं पे। तो इट इज अ ग्रेट कमिटमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सलेंस। और दूसरी बात, जब ये विट्रोरेटिनल सर्जरी जहाँ से शुरू हुई थी, तो वो आपने वो दौर भी देखा हुआ है जिसमें वो कहते थे कि जी नज़र तो पहले कट हो ही गई थी, वो बाकी नज़र जड़ी सी वो सुई मार के खराब कर, वहां से हम शुरू हुए और कहाँ हम पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे, पता नहीं कितना टाइम खर्च हो गया, बट आई एम ऑनर्ड टू बी हेयर। आई स्पेंड अबाउट 10 years here, so it's great coming back. Thank you, Vera, for inviting me over, and thank you, Qasim, for patiently listening. Thank you very much, Professor Hamid, for your very enlightened talk. We go back to our PRP for our diabetic patients. And thank you to Dr. Anika Hafiz for assisting. I would like to thank Professor Asad Aslam Khan Sahab for gracing the occasion. Thank you very much, sir, for joining. And Professor Javed Chaudhary Sahab. Sir, kindly, thank you very much for joining us. I would request, sir, Professor Lateef Chaudhary Sahab, for your kind words, sir. कुछ कहिएगा सर हमें। मैं तो ये कह सकता हूँ, मुझे 10 साल के बाद यहाँ आके तो समझ लगी ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, और मुझे बहुत मजा आया है आप लोगों से मिलके, इस जगह पे आके जहाँ से मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी, रियल ऑप्थेल्मोलॉजी शुरू की थी in 1953। मुझे आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई है। तो मेरी हीयरिंग में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सुन नहीं सका, समझ नहीं सका, लेकिन बड़ा मजा आया आपको सुनने। सर
बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करने की हिम्मत हौसला दे और हमारी मदद करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रोफेसर असलम साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर कुछ कहिए। ये कहना है कि हम सब ने जो कुछ भी कहा पेशेंट के बेनिफिट का कह दिया और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बेनिफिट का कुछ नहीं कहा। तो मैं अब अपने प्रोफेशनल्स के बेनिफिट के लिए आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप पहले इंस्टीट्यूशंस को लेजर मशीनें लेके देते थे ना, अब प्लीज इनको भी एक एक ले दें। लेजर मशीन, ऑर्गन लेजर मशीन इनको ले दें एक एक। नहीं, वो इंडिविजुअली हर किसी को ले दें क्लिनिक के लिए। मैं सर आप बैठे। ऑन अ लाइटर नोट, जब सर आप बैठे एक मिनट सर आपको याद होगा जब आई वाज हियर तो आपने वो जो हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट थे परवेज साहब, उनके साथ मिलके ये जो आपकी वेरिडस मशीन पड़ी हुई है हाफ एंड हाफ सर ने डोनेट की हुई है, तो डू रिमेम्बर दैट। और अब उसकी उसकी देखें, मशीन्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है पब्लिक सेक्टर में खास तौर पे, और कई हाथों पे क्योंकि इस्तेमाल होती हैं। तो मैं ट्रैक रखता हूँ मेरा से, तो इंशाल्लाह जब पीआरपी को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं तो लेज़र को भी विल लुक आफ्टर, डू समथिंग अबाउट इट। डॉक्टर मेरा खास तौर पर जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम हुकूमत को देखते रहते हैं। हुकूमत में पैसे देगी तो ये मशीन देंगे वो मशीन देंगे, ये सबसे बड़ी गलती। हुकूमत से सिर्फ पैसे लेने के लिए है कि आपने मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इक्विपमेंट से पैसा पूछिए उनके पास, ना कोई गलती करनी चाहिए उसको टाइम वेस्ट करने के लिए उसको जीए। अब ये वर्किंग एफर्ट दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके इलुमनाई इतना ह्यूज नंबर है, इतना ह्यूज नंबर है, अगर आप 10 को सिर्फ अप्रोच कर लें, आपको जो भी अपने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ब्लॉक 1 अरब 45 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट करा। मैंने 2010 में मुकुल साहब के पास किया, एक वीक में रहते हैं, मैं 8 घंटे ट्रैवल करके गया, वहाँ से शिकागो से उनके पास गया, उनको रिक्वेस्ट की एंड ही कमिटेड, he wanted to pay back to his alma mater, और उसने कहा कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा क्वालिटी पर, व्हाटएवर इज द कॉस्ट। उस वक्त 80 करोड़ थी और बढ़ते डॉलर के रेट बढ़ के 1 अरब 40 करोड़ बन गया। इवन नाउ एट दिस पॉइंट 7.5 करोड़ उसने आई बैंक के लिए उन्होंने दे दिए, उन्होंने बताया बैंक के लिए इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो स्टूडेंट की वेट करती है, तो मैं कहता हूँ कितना पोटेंशियल है, मतलब है आप उनके पास जाकर मांगे तो सही ना। तो आप पहले तो काम आप करें कि हुआ ऑप्थेल्मोलॉजी तो ग्रेजुएट तो करके आप नहीं बने में, तो उसको अप्रोच करें, एक तो अप्रोच करें, आप देखिए कैसे चीजें आनी शुरू। Thank you very much for your advice. We continue with Dr. Javed Chaudhary, sir. आपके words of wisdom. शुक्रिया। कहूँगा हाँ बहुत अच्छे खामन है और बेगम भी बहुत अच्छी है, फौरन पानी ला के रखा था, मैं देख रहा था। ओवर द ईयर्स हमने देखा जी कि ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ना वो बहुत अच्छी तरक्की कर रही। हम लोग जो थे इंडिविजुअल मेहनत पे जोर देते थे, एक आदमी सारे काम करता था, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी।
अब लोगों ने अपना अपना एक फील्ड पकड़ना शुरू किया है। और जब एक आदमी एक फील्ड पकड़ ले, बहुत कम भी काम करे तो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो बच्चे हमारे जो है माशाल्लाह सुपर स्पेशलिटीज़ में आ रहे हैं, एंड वी होप कि हमने जो जो काम किए ये उससे आगे जाएंगे। और हमने जो किया या सीखा वो फ्रॉम द स्क्रैच था, इनको बेस बहुत अच्छा मिल गया। मैं मिसाल के तौर पर ऑक्टोप्लास्टी में फरहान ने मुझसे सीखा फॉर एग्जांपल, तो ये इज़ अ वेरी गुड बेस। अब ये उसके ऊपर बिल्ड कर सकता है, रादर देन कि एक्सपेरिमेंट करे, ये करे, वो करे। इसी तरह विट्रोरेटने में है, इसी तरह बाकी चीज़ों में है। सो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ, मतलब ऑफ द ट्रैक है, हमारे आई में हमारे बड़ी दूसरे डिपार्टमेंट्स को बड़ा अनयूजुअल लगता है कि सारे लोग इकट्ठे मिलके बैठते हैं, इकट्ठे मजाक कर रहे होते हैं, इकट्ठे छेड़ रहे होते हैं एक दूसरे को। ये दिस इज ओनली इन द आई सेक्शन। सर्जरी में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, मेडिसिन में एक ही वार्ड में एक दूसरे की शक्ल देख। और द मेन रीज़न आई फील दो चीज़ें हमारे अंदर इस वक्त हैं हमारे शोबे में। सबसे पहली बात यह है कि मैंने देखा कि हमारे लोग एक दूसरे के मरीजों का मजाक नहीं उड़ाते, ट्राई टू कवर इट अप। ये हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, सर से सीखा और राजा साहब से, जब भी बासित साहब से, जब भी कोई ऐसा मरीज आता था कि मैं ऐसे ख़राब हो गया, ये उन्होंने तो ये कहा था, आप ये कह रहे थे, जब आप उनके पास गए थे तो ये सिचुएशन होगी, अब मेरे पास है तो ये नहीं कहते थे कि उसने क्या कर दिया क्या। ठीक है। और तो एक दूसरे के मरीजों का मजाक नहीं उड़ाते, और दूसरी बात जो है बहुत बड़ी बात यह है कि अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। ये लाहौर की यूनिवर्सिटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें बड़े हमें कहते हैं पुट दे फुट डाउन कि तुमने ऐसे करना है, और हमारे जूनियर्स जो हैं दे सिंपली यस ठीक है जी। आगे से उसका फ़ायदा ये है कि आपस में झगड़ा आपस में हो जाता है, मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा होता है किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ था। तो ये दो चीज़ें हमारे अंदर है, एक दूसरे के मरीज़ का मजाक ना उड़ाएं और बड़ों की इज्जत करते रहें। तो माशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा, एग्जाम्पलरी हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। इतने लेजेंड्स बोलने के बाद मेरे को बोलने की गुंजाइश तो नहीं रहती। मैडम ने कहा है वर्ड्स ऑफ विजडम, तो जो व्हाट आई हैव फेल्ट कि आपको भी पता है कि बंदा सारी जिंदगी ही सीखता है, और एकेडमिक टॉक्स भी काफ़ी होगी, बाकी चीज़ें भी होगी। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, जो व्हाट आई हैव फेल्ट कि जो जिंदगी में हमेशा आपको फ़ायदा देगी, मुखसर बिल्कुल यह है कि बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद, इसको पल्ले बांध। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। I would like to invite Dr. Sara, our associate professor, for the Now I would like to invite Dr. Arshad Mehboob Saab to please come on the stage and announce the position of the presenters, and also for all the professors for the findings. Thank you very much, Dr. Sara. गंगाराम की लेगेसी प्रोफेसर लतीफ़ चौधरी से शुरू हुई थी और माशाल्लाह आज तक जो है ये मेंटेन है और डे टू डे उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये किसी भी इंस्टीट्यूट का एक बड़ा क्रेडिट जाता है इसको कि लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो पीआरपी के रेफरेंस से मुझे वो याद आता है एक किस्सा कि बादशाह सलामत जेल की सैर को चले गए, सैर ही करने जाते हैं बादशाह सलामत, तो वहाँ देखा उन्होंने कि जो कैदी हैं वो बड़े थिनी से और चलने फिरने से भी बेजार हैं। तो उन्होंने पूछा जेलर को बुला के कि क्या मसला है। उन्होंने कहा जी मेरे को 2000 कैदी ने तो 200 बंदियां का खाना आंदा है। तो बैठ के मीटिंग में क्या इस तरह करो 200 बंदे 200 कैदी रख लो, बाकी सारे मार दो। तो पीआरपी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप वो एरियाज जो है उसको आप ख़त्म कर दें, जो मेन सप्लाई है वो आप सेंट्रल जो वाइटल एरिया उसको कन्वर्ट कर दें। तो मैं जी चले वो जितने जितने इमरान खान साहब कहते हैं उतने कर लें।
जी सब बच्चों ने तो बहुत अच्छे केस बच्चों ने तैयार किए और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेल मेंटेन, वेल प्रेजेंटेड एंड वेल मैनेज्ड। बड़ा मुश्किल था कि किसको हम नंबर 1 पे रखें, 2 पे, 3 पे रखें। तो सारे केसेस ही एक्चुअली नंबर 1 है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल के लिहाज से हमें थोड़ी सी वो कुछ ना कुछ चीजें हैं। डॉक्टर अब्दुल कयूम आप आ जाइए।